Hello students, good morning all of you. Today I am here for the first activity of the Unit 2 poem Noses, covering the reading competency today. Okay? Now we are going to learn the following things: to read and recite the poem with actions and gestures, to read the new words aloud and find out their meaning, and to make sentences. Okay? Now look at this chart. This is showing the different parts of the body. You are learning these body parts since your pre-nursery classes, right? Let's read the names quickly, starting from the head. Okay, left side. Look at the names and read the words after me. Head, eye, ear, mouth, neck, elbow, hand, finger, stomach, heel, toenail, toe. Now coming to the right side: toe, foot, knee, arm, waist, chest, shoulder, jaw, nose, cheek and hair. Okay, let's do a short activity. Okay, I will tell the name of any body part and you will touch it. Okay, follow my instructions. Let's start. Touch your eyes. Very good. Now touch your toe. Did you touch the right part? Yes. Look at the bottom. Toe is the front part of your foot. Okay. Now touch your waist. Very good. Move your fingers. Move them. Now take a deep breath in. एक लंबी सांस लो. Now breathe out. लंबी उस सांस को छोड़ो बाहर. Very good. So can you tell me which body part you used for this breathing activity? Yes, it is the nose. Okay. What other than breathing nose does? ब्रीदिंग के अलावा और किस लिए हम नोज का यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर स्मेलिंग थिंग्स. सूंघने के लिए करते हैं ना. सो द टाइटल ऑफ द टुडेज पोएम इज नोजेस. लेट्स रीड द पोएम. You repeat after me. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. Now I will recite it and you also try to recite. Okay? Let's start. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. Understood? Okay. Now try to recite as I recited. Okay? I will tell you its meaning now. This poem Noses is written by the poet Eileen Fisher. In the first stanza, the poet is telling that when I look at the mirror and look at my nose, जब मैं मिरर मतलब शीशा, ठीक है, जिसमें आप अपनी इमेज देखते हैं, उसमें अपने आप को देखता हूँ और अपनी नोज को देखता हूँ. आई फील इट इज द फनीएस्ट थिंग. फनीएस्ट मतलब एनीथिंग दैट मेक्स यू लाफ, जिसे देखकर आपको हंसी आती है, दैट इज फनीएस्ट थिंग. तब मुझे लगता है कि नोज सबसे ज्यादा हंसीदार चीज है. इट इज सो बिकॉज इट इज स्टक देयर and I can easily look at it. It has two holes for breathing.
वो नाक वहाँ पर बिल्कुल चिपकी रहती है, स्टक मतलब फिक्स्ड, ठीक है, वहीं पर चिपकी रहती है और मैं उससे आसानी से देख सकता हूँ। और नोज में 2 होल्स भी होते हैं जिससे हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रीड द सेकंड स्टेंजा. You also repeat after me. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. Now let's recite it. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. Understood? Now I will tell the meaning of this stanza. Okay? So, in the second stanza, what is the poet telling? The poet is telling that when I look in the mirror and saw, जब मैं मिरर में अपने आप को देखता हूँ, I noticed that the space between the end of my chin, touch your chin, अपनी चिन को छुओ, वेरी गुड, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और जहाँ से मेरे बाल स्टार्ट होते हैं, अपने हेयर्स को टच करो, टच योर हेयर, तो इन दोनों के बीच में जो जगह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जगह किसने ऑक्यूपाई की हुई है? इज मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय नोज, नोज ने. इट इज स्टिकिंग देयर लाइक अ हैंडल. और जो हमारी नोज है वो हमारे फेस में ऐसे चिपकी हुई है जैसे कि कोई हैंडल है, किसी चीज का हैंडल है, इस तरह से चिपकी हुई है. अंडरस्टूड? वेरी गुड. So in the second stanza, the poet is telling that when I look at the mirror, I notice that the space between the end of my chin and the start of my hair is mostly occupied by the nose. Now let's read the third stanza. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. Okay, now let us recite it. Repeat after me. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. Okay, understood? Now recite it. See, at the end the name of the poet is written. It is written by Eileen Fisher. Now I will tell you the meaning of this stanza. Okay? So in this stanza, the poet tells that if someday you want to laugh out loudly, अगर किसी दिन आपका मन करे जोर से हंसने का, गिगल मतलब लाफ आउट लाउडली. ओके, गिगल मतलब जोर से हंसना. जोर से हंसने का अगर आपका मन करे, जस्ट लुक इन द मिरर. आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखो एंड यू विल फाइंड हाउ फनी योर नोज लुक्स. तब आप देखोगे कि आपकी नोज सच में कितनी फनी लगती है, कितनी फनी दिखती है. और जब आप ऐसा फील करोगे, आपको खुद ब खुद जोर से हंसी आ जाएगी.
अंडरस्टूड? मीनिंग समझ में आया? वेरी गुड. Now from the starting, okay, from the first stanza to the last stanza, there are 3 stanzas. Read all of them, then recite. Okay, now coming to the new words of the poem. Read them after me. Mirror, funniest, breathing, sticking, and the last one is giggle. Okay, now you have to write these new words in your notebook and also make one sentence using these new words. इन words को use करके एक sentence भी बनाइए, खुद से बनाइए उस sentence को. ठीक है? Mirror, its meaning is a glass which reflects a clear image, जिसमें आपको एक साफ इमेज मतलब पिक्चर दिखाई दे, फोटो दिखाई दे. ठीक है? उसके सामने अगर कुछ रखो तो वैसे ही फोटो उसमें दिखाई दे, उसको बोलते हैं मिरर. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन 2 sentences. आई ऑलवेज लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर बिफोर गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जाने से पहले अपने आप को मिरर में जरूर देखती हूँ. सेकेंड सेंटेंस, मिरर ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ. और मिरर में हमेशा वही चीज दिखाई देती है जो उसके सामने होती है. सेकेंड वर्ड इज फनीएस्ट, कॉजिंग लाफ्टर, जिससे हंसी आए. सेंटेंस, माई ब्रदर टोल्ड मी द फनीएस्ट स्टोरी. मेरे भाई ने मुझे सबसे हंसीदार कहानी सुनाई. ही इज द फनीएस्ट राइटर. वह बहुत ही हंसीदार मतलब मजाकिया राइटर, लेखक है. थर्ड, ब्रीदिंग, टेकिंग इन एंड थ्रोइंग आउट ऑफ एयर. सांस अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वर्ड, स्टिकिंग, फिक्स्ड. स्टिकिंग मतलब फिक्स्ड, चिपका हुआ, एक जगह पर रुका हुआ. ठीक है? सेंटेंसेस, राम इज नॉट स्टिकिंग टू हिज पॉइंट. राम अपनी बात पर अटका हुआ नहीं है. ठीक है? अपनी बात पर वह रुका हुआ नहीं है. यू शुड बी स्टिकिंग टू योर डिसीजन. आप जो भी डिसीजन लो उस पर डटे रहो. ठीक है? फिफ्थ वर्ड इज गिगल, टू लाफ, हंसना. सेंटेंसेस, दे गिगल एट माई जोक्स. वो मेरे जोक्स पर हंसते हैं. माई पेरेंट्स गिगल वाइल वॉचिंग एनी कॉमेडी मूवी. मेरे पेरेंट्स हंसते हैं जब भी वो कोई भी कॉमेडी मूवी देखते हैं.